If we see the rainy season, it's coming in the month of श्रावण। ये श्रावण के महीने में आने वाला एक महीना है वर्षा ऋतु। So we can see here Chaitra, which is starting near about on the 15 March onwards, Baisakh. So this is the Vashant Ritu. तो चैत्र और वैशाख का जो समय होता है उसे हम वसंत ऋतु कहते हैं। Then the Jyesht and Ashar, these 2 months, May, June, July. So they are Grishma Ritu or the summer season. It's starting near about 15th May. So 15th May to 15 June and the 15 June to 15 July. So ending near about on the 15 July. तो लगभग आप समझिए कि अभी अभी समाप्त हुआ है। अब चालू होता है वर्षा का महीना, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का प्रारंभ लगभग 15 जुलाई के आसपास होता है और ये 2 महीने तक जाएगी। सो 15 जुलाई टू 15 अगस्त एंड 15 अगस्त टू द 15 सितंबर। So 15 July to 15 September, these 2 months is the time of rainy season. So as per the Hindi month, this is the Shravan and Bhadrapach Mahina. सावन भादो, in the short we are telling सावन भादो। हम कहते हैं सावन का महीना और भादो का महीना ये वर्षा ऋतु। तो सावन मास से वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। कहते हैं कि श्रावण इज द मास, श्रावण इज द मंथ when we are doing worship of लॉर्ड शिवा। हम भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, हम कम खाते हैं, हम उपवास करते हैं और अपने शरीर की ऊर्जा को बचाकर रखते हैं, हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं क्योंकि ये महीना भगवान शिव जी का महीना है और हम शिव जी की उपासना करते हैं। सो वी आर डूइंग द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा ड्यूरिंग दिस मंथ, right? And we are following the brahmacharya. Why? Because in the summer and the rainy season we are having least power in the body। गर्मी की ऋतुओं में और वर्षा की ऋतु में हमारे शरीर में सबसे कम ताकत होती है, हमारा शरीर कमजोर होता है, क्षीण होता है बाकी ऋतुओं की तुलना में। तो इन ऋतुओं में थोड़ा हमें अपने शरीर का ध्यान रखना होता है और हमें अपनी ऊर्जा को बचाकर खर्च करना होता है। तो ठंड में जो हमारे पास ऊर्जा होती है, विंटर सीजन में जो हमारे पास ऊर्जा होती है, व्हाट एनर्जी वी आर हैविंग इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ड्यूरिंग द विंटर सीजन, द सेम एनर्जी वी डोंट हैव दिस टाइम। So we should conserve our energy, we should preserve our energy. So we can do the fasting, we can do the upavas, we can follow the brahmacharya and we can eat the light food। तो हमें उपवास करना है, व्रत करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कम खाना है और बहुत हैवी फूड खाया तो पचेगा नहीं, तो इंडाइजेशन होगा, डायरिया होगा। So these are the 2 months is the time, is a very important time। Even we know चतुर्मास, चतुर्मास का मतलब है 4 महीने का समय। तो 4 महीने तक हमें अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होता है। इसमें भी 2 महीने सबसे महत्वपूर्ण है। So if we are taking care of our health for 4 months, it's wonderful, but 2 months are more precious, right? So we are doing the fasting and during the fasting we are doing the worship or the Lord and we are not eating the outside food। हम बाहर का खाना पीना नहीं खाते क्योंकि श्रावण के मास में जब पानी बरसता है, नदियों का पानी भी गंदा हो जाता है और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस वातावरण में बढ़ते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। सर्दी, खांसी, कफ एंड कोल्ड तो फैलता ही है, कभी कभी हैजा, डायरिया, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां भी फैलती हैं। सो बिकॉज ऑफ द raining, there are lots of like dirtiness coming in the river water। So like in the other season we can drink the river water if river is flowing, but during the rainy season even the river water is not recommended। So in the previous time people were drinking water directly from the river, but nowadays people are having filtration plant, RO, aquaguard in their home। So now the scenario has changed, but in the Ayurveda it has been written the person who is drinking the river water should avoid drinking river water during the season। जो व्यक्ति नदी का पानी पीते उन्हें नहीं पीना चाहिए। बात सच है कि नदी का पानी गंदा हो जाता है।
So during the season, we should avoid the outside food because there is a great possibility of the infections or diarrhea, colon disease, because the growth of the microorganisms are very common. So we do fasting. So this is the month we follow lots of regimes for keeping our health perfect. इस ऋतु में यानी 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक, 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक, ये 2 महीनों का समय बड़ा ही संवेदनशील समय है. These 2 months times are very sensitive. In the summer season just has gone, just has passed. अभी अभी गर्मी की ऋतु गई है. So as per the concept of Ayurveda, in the summer season we were having lots of heat around, and in the summer season we had lots of dryness in our body because of the excessive heat. Because of the heat, there is a drying of the body fluid. कि गर्मी ऋतु गई और गर्मी ऋतु के प्रभाव से हमारे शरीर का बहुत सारा फ्लूइड खत्म हो गया, पसीने के रूप में बह गया, हमारे शरीर में ड्राइनेस पैदा हो गई, हमारे शरीर में थोड़ा वायु आ गया. So we have received the vayu, we have accumulated the vayu vata in the summer season. तो गर्मी की ऋतु में नेचुरली हमारे शरीर में वायु का कलेक्शन होता है, वायु का एक्यूमुलेशन होता है, वायु का संचय होता है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता. इट्स नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम. बट एज सून एज वी आर एंटरिंग टू द नेक्स्ट सीजन, रेनी सीजन, नाउ दिस वाटर इज गेटिंग एग्रीवेटेड. हम जैसे ही थोड़ा मौसम बदलता है, जैसे ही मौसम थोड़ा क्लाउडी होता है, तो ये वाता एग्रीवेट हो जाता है. यानी पहले 2 महीनों में सिर्फ वायु का संचय हुआ. इन गर्मी की ऋतु में, इन द समर सीजन, देयर इज ओनली कलेक्शन ऑफ द वाता एंड इट वाज नॉट क्रिएटिंग मच प्रॉब्लम, मच डिफिकल्टी. But as soon as there is seasonal changes and we are reaching to the rainy season, and suddenly because of the changes in the seasons, now this vata is getting aggravated and creating the disease. Aggravation of vata in the rainy season. So in the Ayurveda it has been told everyone should take care of the vata during the rainy season. Everyone should do something to reduce the vata, to calm down the vata during the rainy season. हर व्यक्ति को वर्षा ऋतु में अपने वायु को शांत रखने के उपाय करना चाहिए. In the Ayurveda it is recommended, if you have having the facility of panchakarma, अगर आपके पास पंचकर्मा की फैसिलिटी है, then do the vasti karma or the enema, medicated enema under the observation of Ayurveda physician. आपको आयुर्वेद डॉक्टर की उपस्थिति में अपना एनिमा करवाना चाहिए, अपना वस्ती कर्म करवाना चाहिए. वस्ती इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द वाता डिसऑर्डर. वस्ती चिकित्सा वायु रोगों के लिए सबसे उत्तम मानी गई है. इट्स ए excellent treatment methodology for vata disorders. So Vasti means we are making the enema. There are more than 1,000 types of enema given in the Ayurveda. 1000 से भी ज्यादा प्रकार के एनिमा का वर्णन आयुर्वेद में है. एनिमा का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ पेट साफ कराना. आज जब एक लेमन बात करता है एनिमा की, तो उसको लगता है कि एनिमा मतलब बस पेट साफ करा दिया, अगर पेट साफ नहीं हो रहा तो एनिमा ले लो. So as per the understanding of the layman, the meaning of enema just clean the colon, just clean the stool, but not as per the Ayurveda. As per the Ayurveda, with the help of this treatment, which is called Vasti Chikitsa, Vasti treatment, and when we are giving the different type of the enema of oil, the enema for decoction, the various types of the enema, and we are having different types of the enema for different disease. Like we are having for the diabetes, we have different types of enema. For the high blood pressure, we have different enema. For the lower back pain, knee pain, upper back pain, spine problem, we have different types of the enema. So for skin disease, races in the skin, itching in the skin, we are having different type of enema. So for each and every single problem, we are giving the different type of enema. तो हर किसी व्यक्ति की कंडीशन के अनुसार हम अलग अलग प्रकार का एनिमा देते हैं.
लेकिन एनिमा का वस्ती का जो प्रथम लक्ष्य होता है, प्रथम टारगेट होता है कि वायु को शांत करना. सो in the Varsha season, in the rainy season, it's the best time if you take the वस्ती चिकित्सा. अगर आप वस्ती चिकित्सा लेते हैं, ये सबसे उत्तम समय है. क्यों उत्तम समय है? क्योंकि वायु का प्रकोप होता है. सपोज द पर्सन हु कैन नॉट डू दिस पंचकर्मा ट्रीटमेंट, नो प्रॉब्लम. देयर आर मेनी अदर मेथड टू calm down the vayu, to calm down the vata. We can take the herbal tea, we can take some Ayurveda medicine, we can take some home remedies, and we can improve our diets so that there should not be aggravation of the vata. हम आयुर्वेद की दवाइयाँ ले सकते हैं, हम अपने घर के किचन स्पाइसेस ले सकते हैं, हम खाने पीने में परिवर्तन कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिनके माध्यम से हम वायु को ना बढ़ने दें, क्योंकि वायु ही बढ़ता है सबसे ज्यादा. आप समझ सकते हैं, V for वर्षा and V for vata. So Varsha means the time of vata aggravation. वह समय है जो वायु प्रकोपित होता है. संचय तो पहले हो चुका. संचय का मतलब है कि आप अपने पॉकेट में कुछ भरते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, इसे संचय कहते हैं. लेकिन अब पॉकेट फुल हो गया, अब कुछ भी डालो तो नीचे गिर जाता है, उसे कहते हैं प्रकोप. So when you are filling something in a pocket, that is called accumulation. So keep on filling the pocket. Something is accumulating in the pocket, but when your pocket is full, now whatever you put in the pocket, it will fall down. That is called aggravation. Aggravation का मतलब है अब गड़बड़ होगी, अब वायु को रखने की जगह नहीं बची, अब वायु फैलेगा, घूमेगा. तो पहले तो सिर्फ इकट्ठा हो रहा था, अब घूमेगा तो बीमारियां पैदा करेगा. तो वायु की बीमारी क्या होती है? वायु की बीमारियां जैसे कंपन होना, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होना, दर्द होना. So when the person is suffering with the neurological problems, tremors, or the joints pain, these all are coming in the vata. Even the attack of paralysis, facial stroke, brain stroke, these all are under the vata. ये सब वात के अंदर आते हैं. वायु मतलब neurons. So the rainy season is very common season, and we should take care of our health. हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपने आप को कई चीजों से बचा के रखना चाहिए. Now, in the rainy season, there is also collection of pitta. Okay, again, collection means just collection. It's not giving much problem. कि पित्त का कलेक्शन होता है, पित्त इकट्ठा होता है. होने दो इकट्ठा, आगे की ऋतु में प्रॉब्लम करेगा, अभी तो कुछ नहीं करेगा, अभी तो इकट्ठा हो रहा है. So when something is just accumulating, the meaning of accumulation, it will not create the problem right now. It will create the problem in the next season when it will get aggravated. So in the rainy season, there is a collection of pitta. पित्त का संचय हो रहा है. कई लोगों को इसी कारण से पित्त के विकार भी होते हैं. So few people are also suffering with the pitta disorder during the rainy season. But the more problematic problem is vata. Vata is aggravated. वायु तो बड़ा परेशान करती है इस ऋतु में. So many persons suffering with a fever during this season because there is a monsoon season and these are the monsoon disease. Few persons suffering with a headache. कई लोगों को बुखार आता है, सिर दर्द होता है. Many persons suffering with the digestive disorders, even with the hepatitis, because this season is very common for infections. Even persons are suffering with the lung disease, cough and cold. लोगों को सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड हो जाता है. Many persons suffering with the flu, blocked nose and the running nose. So these are the monsoon disease. इनको हम कहते हैं कि मानसून की बीमारियां, और लोग इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं इस ऋतु में. अब हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा ताकि ये बीमारियां हमारे शरीर पर हावी ना हो पाए. So in the rainy season, this is written in the Hindi, but don't worry, whatever written here in the Hindi, in the next slides we will see also in the English. Right? So in the rainy season, there is a very great chances of the infections and the diseases. वर्षा ऋतु में हमारे शरीर में इन्फेक्शन का और बीमारियों का खतरा बहुत ही बढ़ जाता है. तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्या खाएं क्या ना खाएं. हरी सब्जियां नहीं खाना चाहिए. डोंट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स because green vegetables having many insects. But there are also methods to eat the green vegetables. I will tell you how. But in the first thing, if you ask me, I will tell you about the green vegetable. हरी सब्जियां मत खाइए. Right? So we should also
not take the high protein diet because otherwise we have to digest it. So be sure, do not think okay we have to eat the food for great energy because you will not able to digest. आप पचा नहीं पाएंगे. जब हम सब्जियों की बात करते हैं उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं. In the green vegetables there are insects, so they might create the abdomen gastric infections, intestinal infections and the abdominal pain. And we should strictly avoid cabbage and the flour. They are very harmful and might create the abdominal pain because they are having lots of bombs, lots of insects. फूल गोभी पत्ते गोभी का प्रयोग नहीं करना चाहिए. और कहते हैं कि इस ऋतु में कच्चा सलाद भी मत खाइए. खाना है तो उसे स्टीम्ड करके खाइए, नहीं तो ये भी परेशानी बढ़ा सकते हैं. So don't take the raw salad. If you want to enjoy the raw salad, if you want to enjoy the salad, steamed it, right? So in this way, we should avoid all the food which is very heavy to digest. वो सारी सब्जियां जो पचने में भारी हैं कम करें, जैसे आलू है, अरबी है, भिंडी है, फ्लावर है, मटर है. So don't eat potato, lindy, lady finger, flower, मटर, etc. This is the arbi, etc. Please don't eat. They will create lots of indigestion. अगर आपने खा लिया पचेंगे नहीं. खूब सारा आम बनाएंगे, मल चिपक जाएगा पॉट में, पानी से बहेगा नहीं. So they will get lots of ama and might responsible for the bad health. Even avoid the mushrooms in the rainy season. It might create many problems, right? Avoid raw salad, I already told you. And even do not eat too much spicy food because slowly I told you there is a deposition of pitta as well is going on. पित्त का भी संचय हो ही रहा है. हमें वो सारे खाना खाने से बचना चाहिए जो पचने में भारी हैं, जैसे कि उड़द की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, राजमा, छोले. We can enjoy them during the winter season, but don't try to eat like the black gram, like the rajma, chola, kidney beans and all. Okay, different types of the beans. They're very difficult to digest. We are telling them कठोर, हम इन्हें हिंदी में कठोर कहते हैं. Definitely whatever we are eating, we should eat after boiling it. बिना boil करके कुछ भी मत खाइए. So avoid these all things. Avoid the leafy vegetables. Strictly avoid the flour. Strict avoid cabbage. Limit potato. Limit lady finger. Don't eat arbi. Avoid mushroom. Don't take raw salad. You can take steamed salad. And don't take this gram and all. कठोर, किडनी बीन्स एंड ऑल. ये सारी चीजें बंद करिए रेनी सीजन में, नहीं तो पचेंगी नहीं. और सबसे मुख्य रूप से ग्रीन वेजिटेबल्स. नाउ समवन आस्किंग मी, नो आई कांट, आई एम फैन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स टू मच, कि हरी सब्जियां खाना बहुत पसंद है, हरी सब्जियों के बिना रहना संभव नहीं है, तो कैसे खाएं. सो इफ यू वांट टू ईट द ग्रीन वेजिटेबल्स, ओके, इन द आयुर्वेदा, इन द अष्टांग हृदय इट्स रिटन. In the Ashtanga Hridaya, it's written, number one, you should avoid to eat green vegetables, but still you want to eat. आपको हरी सब्जियां नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप खाना चाहते हैं, तो क्या करिए. नंबर वन, boil it, or we can tell steam it. Number two, remove the water. Remove the water from this, from it. इसमें से पूरा पानी हटा दो. नंबर थ्री, now fry it in oil. Like whatever oil you are taking, like the mustard oil or the sesame oil or any other oil. So fry them in the oil, then it's allowed to eat. इस माध्यम से आप खा सकते हैं, अदरवाइज मत खाइए. कि इसे हरी सब्जियों को उबालिए, पानी को फेंक दीजिए,
फिर उसको तेल में भूनिए और फिर आप उसे जैसे भी खाना चाहें खा सकते हैं. So this method is given in the Ayurveda. If you want to enjoy the green leafy vegetables in the rainy season, you can have this. Now regarding the rainy water is very purest form of the water, purest form. कि वर्षा के पानी को बहुत ही शुद्ध माना जाता है. पहले के समय काफी ये प्रचलित था कि लोग अपनी छतों पर, अपने आंगन में वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए टैंक बनाया करते थे और उसको फिर लंबे समय तक यूज किया करते थे. अभी भी कुछ लोग ऐसा एक छोटे लेवल पर करते हैं. So the people used to collect the rainy water because rainy water is really very pure form of the water. ये पानी बहुत ही शुद्ध होता है. आप खुद ही देखिए कि डायरेक्ट आकाश से जब नीचे गिरेगा तो कितना शुद्ध होगा. कोई मिलावट नहीं, कोई मिक्सिंग नहीं, कोई जमीन का स्पर्श नहीं, कोई मिट्टी का, पत्थर का, किसी भी चीज का स्पर्श नहीं. डायरेक्ट ये जब बादलों से नीचे गिरता है तो ये प्योरेस्ट फॉर्म में होता है. सो द रेनी वाटर इज वेरी प्योरेस्ट फॉर्म वाटर एंड द रेनी वाटर इज हैविंग हाई लेवल ऑफ मिनरल्स. इसमें काफी मिनरल पाए जाते हैं, हमारे हेल्थ के लिए बड़ा ही अच्छा माना गया. सो यू कैन कलेक्ट द रेनी वाटर and you can drink it, and definitely in the rainy season whichever water you want to drink you need to boil it first. कोई भी पानी आप पीना चाहते हैं उसे बॉयल जरूर करिए कम से कम रेनी सीजन में. Now we can enjoy this, we can enjoy the blueberry. Okay, whether we can drink the curd or not in the rainy season. क्या हम वर्षा ऋतु में दही का सेवन कर सकते हैं क्या? वर्षा ऋतु मीन्स द सीजन ऑफ वाता प्रकोप, वो ऋतु जिसमें वात का प्रकोप होता है. नाउ वी टॉक अबाउट द कर्ड. द कर्ड इज हॉट इन द नेचर एज पर द आयुर्वेदा. व्हेन द लेमन इज thinking oh curd is cool, but curd is not the cool, curd is hot in the nature as per the Ayurveda. And hot thing is calming down the vata. गर्म चीजें वायु को शांत करती हैं. And curd is also strengthening भी करता है. So the curd who is not much sore, the freshly prepared curd can be eaten. आप ताजा तैयार किया हुआ कर्ड का सेवन कर सकते हो वर्षा ऋतु में. Make sure that you are putting the enough spices. So when you want to enjoy the curd, you can put the clove, you can put the trikatu, you can put the whole trikatu, or you can put the one ingredient. Trikatu means dry ginger. The meaning of trikatu means dry ginger powder, black pepper and the long pepper. तो जब हम इन तीन को मिला देते हैं तो त्रिकटु बन जाता है. तो हमें त्रिकटु का सेवन करना चाहिए क्योंकि त्रिकटु दही में के कारण अगर कफ का प्रकोप होना चाहता है तो नहीं होने देगा. It will balance the curd, trikatu. So we can mix the trikatu, we can mix the clove, we can mix the sindap salt. And we know the curd is very good prebiotics. कर्ड में बहुत अच्छे हमारे फ्रेंड बैक्टीरिया पाए जाते हैं. So it's also helpful for the colonic bacteria. हमारे कोलोन के बैक्टीरिया के लिए अच्छा है. We can put the roasted cumin, roast them, then grind them and put in the curd. So these are the very wonderful. And if you put them in the curd, you can enjoy the curd. आप दही का सेवन कर सकते हैं कभी कभी. और जो लोग रेगुलर खाने की आदी है वो भी कर सकते हैं. उन्हें बस दही को इस तरह से थोड़ा मॉडिफाई करना होगा. आपको स्पाइसेस डालने होंगे. So once you put the spices, now it's very wonderful and you can enjoy the curd. And curd is very great source of prebiotics. So it's really very good for the colon, right? So in the rainy season, we can eat the curd. Now, when there is a cloud, जब भी बाहर बादल हो, तो आयुर्वेद में कहते हैं कि जब बाहर बादल होते हैं, हमारे शरीर में भी बादल होते हैं. When there is a cloud outside, even we are having cloud inside. And what is the meaning of inside cloud? The meaning of inside cloud, that is called ama or dampness. That is inside. जब बाहर क्लाउड होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर उस समय डैम्पनेस होती है, हमारी अग्नि मंद हो जाती है, हम खाने को पचा नहीं पाते.
ठीक से. So in the Ayurveda it's written, when there is a clouds, so what to eat? Number one thing, the best thing, doing the fasting. जब बाहर क्लाउड्स होते हैं तो अगर हम सच में अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अवेयर हैं और हम आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हैं तो फास्टिंग. If we are very much aware for our health and we follow the rule of the Ayurveda, then fasting is the number one treatment. Number two, but we cannot do fasting all the time because we also need energy, we are also hungry, we also have to work. So what is the next? Okay, then the next option, eat the balanced diet. And eat the balanced diet, put the right spices in the food. सही अनुपात में spices डालिए खाने में. Like you can put the roasted cumin, you can put the black pepper, you can put the hing, and you can put the ginger, dry ginger powder, and make your food easily digestible. आपके फूड को ऐसा करिए कि आराम से पच जाए, क्योंकि जब बाहर बादल होते हैं हमारे शरीर के अंदर भी बादल होते हैं, हम खाना खाते हैं पचता नहीं है. So when we are not able to digest the food, so it's written in the Ayurveda, the first the rules for rainy season. So this is the rule of the rainy season. What is the rule? Don't eat food until and unless you digest previous food. आपको जब तक खाना नहीं खाना है जब तक पहले का खाया हुआ पचा नहीं. उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टेकन द ब्रेकफास्ट at 9 a.m. Now the 11 a.m. is the lunch is ready, but your breakfast is still giving you fullness feeling and you are not feeling hungry, so avoid taking the lunch. You might be hungry at the 1 p.m. and take the lunch. हो सकता है आपको 1 बजे भूख लगे तब आप लंच लीजिए. So if the person is not following this, suppose you're taking the breakfast at the 9 a.m., then without digesting the breakfast, when the 11 o'clock, when even you're not hungry, if you're taking the lunch, then this will create, this process is called adhyashan. In the Ayurveda it's telling adhyashan. The meaning of adhyashan, eating the food without digesting the previous food. खाने का सेवन उस समय करना जब आपका पहले का खाना पचा नहीं है. It will create the bis in the body. Bis means toxin. It will create ama in the body. ये हमारे शरीर में दोषों का निर्माण करेगा, बिस का निर्माण करेगा, टॉक्सिन का निर्माण करेगा. It will form the bis toxin or the ama, and in the long term it will create many diseases. So in the rainy season we can put lots of spices for making the food easily digestible. हम कई सारे स्पाइसेस डाल देंगे फूड को आराम से पचाए जाने के लिए. So we can eat the red rice, sali rice, and avoid eating the polished rice. Polished rice means when we are removing all the grains. Now in the Ayurveda it's told, when we are eating any grains, जब भी हम किसी भी प्रकार के grains का सेवन करते हैं, so grains might be very newly cropped grain, अभी उगे हैं, मानो कि राइस है, व्हीट है, वार्ले है, अभी उगे हैं, अभी 3 महीने हुए हैं. And the old grains means more than 1 year old. So because in the rainy season we are not having the stronger digestive fire, so we should always prefer at least 1 year old wheat, rice and all. हमें कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा पुराना अन्न खाना चाहिए, नहीं तो पचेगा नहीं. और ये नया जो उगा हुआ अन्न होता है ये heavy to digest होता है. This is heavy to digest, and if you are eating it then it might create heaviness. But the old grain, more than 1 year old or the 2 year old, this will be light to digest. इसको पचाना बड़ा आसान है.
तो आप इसको प्रेफर करिए. So we have seen in our traditionally, we are keeping the wheat for 1 year or 2 years, then we are start eating. We don't eat them immediately. But suppose you don't have any option, आपके पास ऑप्शन नहीं, आपके पास पुराना गेहूं नहीं, पुराना चावल नहीं, you are not having old grains, you are not having old wheat, old barley, old rice, then what to do? है ही नहीं, then no problem, take the new grains. And first you have to roast it, इसे भून लो. So after the roasting it, now you can start using it. Suppose today you want to make the roti, so from the wheat, but it's a very new wheat, so you can roast the wheat, then you can send for the grinding and get the flour. Now you can cook the meal. तो पहले आप गेहूं को रोस्ट कर लो, भून लो थोड़ा सा, फिर उसे आप पीस लो और उसकी रोटी बनाओ, तो नया होने के बाद भी पच जाएगा. So even it's new, you will able to digest it. So it's written in the Ayurveda that we should use the old grains, old rice, old wheat, and we should avoid the new grains. But if this is not available, then take the new grain, roast it, then you can use it. अगर सब पॉसिबल हो तो पुराना अन्न खाइए, लेकिन नहीं पॉसिबल है तो नए अन्न को आप रोस्ट करके और फिर उसका फ्लोर बनाकर उसे खा सकते हैं. So now regarding the pickles, whether we can eat the pickles in the rainy season or not, so the answer is yes. Why? Because pickles are having sour taste, and sour is calming down the vata, calming down vata. जो भी खट्टा रस होता है वो वायु को शांत करता है. So there are three tests who calm down the vata: sweet, sour, and salty. We know there are 6 rasas: sweet, sour, salty, pungent, bitter, and astringent. ये 6 प्रकार के रस पाए जाते हैं. यानी पहला मीठा, खट्टा और नमकीन. जब हम थक जाते हैं, हमारे शरीर में वायु बढ़ जाता है, तो हम मीठा खाते हैं, हम नींबू नमक शक्कर का पानी पीते हैं. So when we are tired, when we are having more vata, so we are calming down the vata. Why? Using these tests. It means if you want to reduce the vata, if you want to calm down the vata, then take the sweet, sour and salty. अगर आप वायु को शांत करना चाहते हो तो मधुर रस का सेवन करो, मीठा खाओ, खट्टे रस का सेवन करो और नमकीन रस का सेवन करो. इसके प्रभाव से आप वायु को शांत कर सकते हो. And avoid eating these 3, because if you are taking more pungent, they will aggravate the vata. If you are taking more bitter, they will increase the vata. If you are taking more astringent, they will also increase the vata. ये रस वाता को बढ़ा देंगे. They are vata increasing. So because of we can eat the sour food. So in the rainy season हम अचार का सेवन कर सकते हैं संतुलित मात्रा में. Everything should be taken in the balanced amount. हर चीज का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए. So pickle can be taken due to its vata calming nature, right? So enjoy the pickle. Now the green gram is best to digest. Green gram को पचाना बड़ा ही आसान होता है. It's wonderful during the rainy season. तो soak in the water before cooking it. इसे पानी में जरूर भिगोइए कम से कम 2 घंटे या 4 घंटे के लिए. ये बड़ा ही गुणकारी है ग्रीन ग्राम. आप हरे मूंग का, पीले मूंग का, दोनों मूंग का सेवन कर सकते हैं. आप पीले मूंग की खिचड़ी बना सकते हैं, हरे मूंग की भी खिचड़ी बना सकते हैं. So you can make this gram, even you can make the khichdi by using green or the yellow gram. Now, as per the Ritu Haritki concept, so as per the concept of Ritu Haritki, Haritki has been considered as a mother who is taking care everyone like a mother.
तो ऋतु हरितकी के सिद्धांत के अनुसार कि हरितकी माँ के समान है और जो अपने बच्चों की रक्षा करती है, तो अगर हम हरितकी का सेवन करें तो हम सभी प्रकार के दोषों को शांत कर सकते हैं. If we are using the Haritki, we can calm down all types of the disease happening during the rainy season. So in the Ayurveda, it's written about the Ritu Haritki, that in the every season we should take the Haritki with the different things. हर ऋतु में हमें हरितकी को अलग अलग चीजों में मिला के लेना चाहिए. So we should consume the Haritki by mixing with some other thing, and we can balance the complete season. Like when we talk about the rainy season, if we are taking the Haritki and mixing with the sind of salt, and we are taking it, it will balance Vata. It will balance all the problems happening in this season. Just this combination. So if we are taking 1 to 6 gram Haritki, 1 to 6 gram, and mixing the half amount of Sindh salt. Sindh salt. So whatever amount we are taking of the Ritu Haritki, 1 to 6 gram, and mixing the half amount of Sindh salt, and taking this combination with the hot water first thing in the morning, it is wonderful Ritu Haritki Prayog, and it will balance the Vata, it will balance all the problem happening in this season, whether the abdominal pain or the problem of the colon or the indigestion. तो अगर हम 1 से 6 ग्राम ऋतु हरि 1 से 6 ग्राम हम हरड़े का पाउडर लेते हैं और उसे आधी मात्रा में उसमें सिंधव नमक डाल देते हैं, और इसका प्रयोग हमें सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी से करना होता है, और जब हम इसका प्रयोग सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी से करते हैं तो सभी प्रकार के दोषों को शांत करने वाली है ये. तो इसे हम कहते हैं ऋतु हरितकी. इसे हम कहते हैं कि प्रत्येक ऋतु में हरितकी का सेवन किया जाना अलग अलग चीजों के साथ. सो ऋतु हरितकी we definitely can do this. There's a 2 month time of the rainy season. 2 महीने का समय है. हम कम से कम प्रत्येक महीने 10 से 12 दिन कर सकते हैं. We can do 10 to 12 days, and whenever you feel any types of discomfort, you can do on that day. जिस दिन भी आपको कुछ भी डिस्कम्फर्ट लगे हम कर सकते हैं. One of my patient is doing what he is doing. He started recently. अभी अभी उसने स्टार्ट किया. So one of my patient my doing, he is taking 1 glass hot water, mixing 1 lemon juice, and mixing 3 gram haritki powder, and half of this means 1.5 gram near about sindh salt, and he is taking this first thing in the morning. तो उसने क्या किया, 1 गिलास गर्म पानी लिया, उसने उसमें एक पूरा नींबू डाल दिया, निचोड़ दिया, 3 ग्राम हरितकी का पाउडर डाल दिया, और 1.5 ग्राम उसने सिंध सॉल्ट डाल दिया, और इसका प्रयोग वो रोज सुबह खाली पेट करता. ही इज मच बेटर. माय वन ऑफ अनदर पेशेंट ही टोल्ड डॉक्टर, आई ऑलवेज इन द हरी एंड करी इन द मॉर्निंग. मैं सुबह हमेशा भागम भाग में रहता हूं, मैं नहीं कर सकता. सो माय अनदर पेशेंट हु इज टेकिंग द डिनर बाय द 10 PM and going for sleep by 12 AM in the night, that is sleep time. Even I told him do in the morning, but he is doing at the 12 AM in the night. So he's taking the same preparation. वो भी यही ले रहा है जिसमें लेमन, सिंध ऑफ साल्ट, हरितकी पाउडर and hot water, and he is much better. He's feeling wonderful, much better. So this combination is very good during the rainy season. आप इसका प्रयोग रेनी सीजन में कर सकते हैं. ये हमारी हेल्थ को बनाए रखने के लिए बड़ा ही गजब का प्रयोग है. The khichdi is the best solution. It is a khichdi means the combination of dal and rice. So the khichdi is a complete food. There are many ingredients are absent in the rice, some ingredient absent in the dal, but when they unite together, there's a full of ingredient and the complete food you can eat every day. There is no problem if you're eating every day. Even you can put different vegetables in this.
आप खिचड़ी का प्रयोग हर रोज कर सकते हो। ये फुल न्यूट्रिशियस है, इसमें कुछ कमी नहीं है, क्योंकि चावल में कई तत्व पाए जाते हैं और दाल में कई तत्व पाए जाते हैं। जब दोनों को हम मिला देते हैं तो ये कंप्लीट फूड बन जाता है। आप इसमें हरी सब्जियां या कुछ वेजिटेबल भी डाल सकते हो, और ना डालो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड व्हेन यू आर ईटिंग द खिचड़ी, eat it hot, and you can put ghee. If you are having cow ghee, put the little cow ghee over this and drink and eat it. It's a very wonderful. It will balance your all the doshas. It will balance the vata. ये आपके सारे दोषों को शांत करेगी और आपके वात को भी बैलेंस कर देगी। तो रेनी सीजन में खिचड़ी को खाना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। We can enjoy this, but definitely whenever you want to eat any such types of the vegetable, please boil them properly and fry them properly in the oil prior to eating. जब भी आप इन किसी भी चीज को खाना चाहते हैं, आप उनको स्टीम्ड करिए, फ्राई करिए तेल में, फिर खाइए, क्योंकि चीजें गुणकारी हैं, न्यूट्रिशियस है, लेकिन कीड़े होते हैं। डेफिनेटली देयर आर न्यूट्रिशियस बट फुल ऑफ इंसेक्ट्स। यू डोंट नो when some insect will enter in your gut. So in this season we are having very poor digestive fire. Rainy season में हमारी digestive fire बहुत ही कमजोर होती है। Okay, so definitely we have to take care of our digestive fire as we discussed, right? So time to time, whenever possible, drink the hot water. जब भी संभव हो गर्म पानी पीते रहिए। गर्म पानी पीने से आपकी फायर अच्छी बनी रहेगी। Okay, so you should take care of this. In the Ayurveda, each and every small thing has been mentioned. आयुर्वेद में हर small चीज के बारे में उल्लेख है। That we should cover our feet, we should not walk barefoot. Okay, in that way. So we already have discussed these all the things. In the rainy season, it's strictly restricted to sleep during the day. दिन के समय सोना बिल्कुल मना है। जो व्यक्ति इस बात को फॉलो नहीं करते, उनको लंबे अरसे के बाद पता चलेगा जब उनके शरीर में बीमारियां पैदा होंगी। Many person are feeling too much drowsy as soon as they eat the food, and they are helpless. They have to sleep, so they will feel, they will definitely going to get some problems after a long time. Because if you're sleeping during the day, it will create the ama in your body. It will form the ama or the undigested food in the body, and which will create the disease. And it's recommended in the rainy season that we should not do much exertion. हमें बहुत ज्यादा exertion भी नहीं करना चाहिए। We should not go too much under the sun exposure. हमें बहुत ज्यादा धूप के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि धूप भी बड़ी कड़क होती है, एकदम जला देने वाली धूप होती है। The sun is also giving too much heat. Whenever there is a sun, we will see there is too much penetrating heat in this season. And we should do Google. हमें अपने घर में धुआं और जो गूगल का धुआं होता है करते ही रहना चाहिए during the season to make our home insect free. Even whatever cloth we are wearing, so there also we should do some fumigation. जो भी हम कपड़े पहनते हैं उसमें भी कुछ fumigation कर देना चाहिए। पहले ऐसा नियमित रूप से किया जाता था, so that our cloth will be also worm free, insect free. So there are few rules. Number one, avoid adhesion. Adhesion means don't eat the food until and unless you digest the previous food. कि खाना तब तक ना खाओ जब तक पहले का पच ना जाए, right? This is the rule number one. Second rule, take the old grains. आप पुराना अन्न खाइए, at least 1 year old instead of new grains. Okay, but still you want to eat, roast them. Okay. The third rule, moong dal is best. You can make the moong dal, you can make the khichdi and all. Moong dal सबसे बेहतरीन है. The next rule, use the spices like the hing, jeera, curry leaves, garlic for balancing the doshas, for reducing the ama. आप अपने खाने में हींग, जीरा, कड़ी पत्ता, लहसुन आदि का तड़का लगा सकते हो ताकि आपके
कि खाने का पाचन ठीक से हो सके और शरीर के अंदर आम की वृद्धि ना हो, राइट। वी शुड we should avoid the bhindi, lauki, turai, parval, but still we want to enjoy them. So steam them, roast them, steam them, fry them, then eat them. Okay. तो सब्जियां, ग्रीन सब्जियों के लिए तो ये रूल है ही, हरे हरे पत्ते वाली सब्जियों के लिए, कि उनको पहले आपको उबालना है, फिर उनको तेल में तलना है, फिर खाना है। इसी तरह से अगर आपको लौकी, तुरई, परवल आदि का सेवन भी करना है तो वही रूल अप्लाई होता है कि पहले आप उनको स्टीम करिए, फिर उनको रोस्ट करिए और फिर खाइए। देयर शुड नॉट बी any a single possibility of the worms or the insects, because insects are so subtle, so small, sometimes you will not able to see them and they will enter in your gut. कभी कभी इंसेक्ट हमारे गट में चले जाते हैं और फिर लंबे समय की प्रॉब्लम हो जाती है। सो अवॉइड टेकिंग द ग्रीन वेजिटेबल्स, एंड हाउ टू टेक द ग्रीन वेजिटेबल्स वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। एंड हमें खाने में तेल और घी का सेवन करना चाहिए क्योंकि तेल और घी वायु को शांत करता है। सो टेक द ऑयल एंड घी। एंड द स्वीट, सोर एंड सॉल्टी इज गुड। मधुर रस, खट्टा रस और नमकीन रस अच्छा है, इनका सेवन हम करते रहे। यही कारण हमने कहा कि हरी तिक्की को नमक में मिला के खाइए, अचार का सेवन करिए और मधुर रस का भी सेवन करिए, सारे वायु को शांत करते हैं। एंड पंजेंट, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट शुड बी अवॉइडेड। आपको खाने में क्या नहीं खाना है, बहुत ज्यादा गरम तीखा नहीं खाना है, बहुत ज्यादा कड़वा नहीं खाना है और बहुत ज्यादा कशला नहीं खाना है। देखिए खाने में पूरे 6 रस होना जरूरी है, चाहे वो कोई भी ऋतु हो, लेकिन किस ऋतु में क्या ज्यादा खाना है यह जानना ही ऋतुचर्या है। सो वी शुड ईट ऑल द 6 रसाज इन all the seasons, all the 12 months, but in the particular ritu which rasa should be more and which should be less, that is the main thing what we should know about the ritucharya. So curd can be taken as we have discussed and take in the morning instead of evening. अगर आप दही का सेवन करते हैं तो ताजा दही खाइए, लेकिन सिर्फ सुबह, शाम को नहीं। शाम को दही का सेवन करना निषेध है और 4 बजे के बाद तो बिल्कुल भी मत खाइए। Fasting is very important in the season, so whether you do fasting or eat the food in the lesser quantity because our digestion is poor, खाना उपवास करिए और खाना जो खाते हैं उसे कम मात्रा में खाइए। Avoid oily and साबूदाना सैगो ड्यूरिंग द फास्टिंग। ज़्यादा ऑयली खाना और साबूदाने आदि का प्रयोग फास्टिंग के समय मत करिए, क्योंकि साबूदाने को पचाना भी में भी आंतों को काफ़ी जोर लगता है। And because in the season there is a vata is very high, so we can do regular massage. तो हम अपनी रेगुलर मसाज कर सकते हैं, अभ्यंग कर सकते हैं। So we should perform regular massage by using the til tel or the sesame oil, narayan oil or the bala oil or any oil. All the oils are reducing the vata, so we should do the massage. Okay. So we already discussed strictly restricted sleep during the day. दिन में सोना निषेध है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति वृद्ध है, if the person is having disease and the old person can take the sleep, and even the person is not slept during the night can have the sleep, but do not sleep just after the meal. Do not sleep at least 2 hours till the 2 hours after the meal. अगर रात में आपकी नींद नहीं हुई है, अगर वृद्ध है या कोई व्यक्ति बीमार है, वो सो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि खाने के तुरंत बाद नहीं सोना है, खाने के बाद 2 घंटे बाद सो सकते हैं। इन द आयुर्वेदा इट्स रिटन दैट बेस्ट posture, if you want to sleep during the day, sleep in the sitting posture, and I have seen many persons even can sit in the sitting posture. You might be thinking, wow, what is the foolish thing, but if you follow this you can avoid lots of diseases. अगर आप इसे फॉलो करते हैं, इसको फुलिश थिंग नहीं मानते, क्योंकि कई लोग सोचते हैं क्या बात है बैठ के सोना, बहुत फर्क पड़ता है जी। बैठ के आप सोते हो तो आपके शरीर में आमा बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाती है, राइट। सो अवॉइड वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैर नहीं घूमना है, एंड डू द रेगुलर आसन, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम। सो दिस इज द रिज्म ऑफ द rainy season. Take the fenugreek seed very regularly. So fenugreek seed are anti-inflammatory. They are very good for cough and cold. तो fenugreek seed का नियमित प्रयोग करिए। You can soak them in the water and boil them in the morning and have it. आप रात में भिगो दो, सुबह उनको उबाल कर पी जाओ। और just take the fenugreek seed in the various, when we are cooking our food, we can put the fenugreek seed. Suppose you are
मेकिंग द वेजिटेबल, आप सब्जी बना रहे, आप यू आर कुकिंग तोरई, you are cooking wattle gourd, then also you can put the tadka of fenugreek seed. The papaya leaf is very good because in the season, in the rainy season, there is chances to suffer with the dengue fever. So the papaya leaf is very good for increasing the platelet count. इस ऋतु में लोग डेंगू फीवर का भी शिकार हो जाते हैं, तो इस ऋतु में पपीते की पत्तियों का सेवन करना भी, पपीते के पत्तों का रस निकालकर पीना भी काफी गुणकारी है. So it's a very wonderful to take the juice of the papaya leaf. Turmeric is wonderful because turmeric is very good who is bringing the deeper sleep and also keeping away all the flu. हल्दी का सेवन करना भी बड़ा अच्छा है. कई लोग रात को सेवन करते हैं, कई लोग सुबह हल्दी का पानी पीते हैं, दोनों किया जा सकता है. You can do both. Whether you can take the haldi turmeric in the night or you can take in the first thing in the morning turmeric water. It's a very good for flu and it will bring the very deeper level of the sleep. ये फ्लू को भी दूर करेगा, गहरी नींद लेके आएगा. Right? We can take the neem leaves, like a bitter food in the more quantity is not good, but we can take the bitter leaves because sometimes we are getting the fever. So bitter neem leaves are very good and antipyretic. नीम की जो पत्तियां होती हैं वो एंटीबैक्टीरियल तो हैं ही, लेकिन फीवर को भी ठीक करती हैं और कीड़े मकोड़ों को नष्ट करती हैं. So we can use the neem leaves with a two purpose. Number one, we can eat them. Number two, we can make the fume. हम इसका धुआं कर सकते हैं. हम गूगल का धुआं करते हैं, ऐसे नीम की पत्तियों का धुआं कर सकते हैं. So we can burn the fire, put the neem leaves, and when this fume will be going all around, it will make our home like it will do the disinfectant. So neem leaves is very good. Even the tulsi leaf is very good. Tulsi leaf are very good immunomodulator. They are improving our immunity and they are keeping the cough and cold away. So we should take the fenugreek seed, papaya leaves, turmeric leaves, tulsi leaf and the neem leaves. तो ये हमारी थी वर्षा ऋतु की दिनचर्या. तो वर्षा ऋतु की दिनचर्या समाप्त होती है. उम्मीद है कि आपको सब समझ में आई होगी. अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर? वंडरफुल. So today the rainy season is over, but the chapter of rainy season is over, but outside rainy season is still on. Okay. तो रेनी सीजन तो चल रहा है, भले चैप्टर खत्म हो गया. तो अभी पूरे रेनी सीजन में इन चीजों का ध्यान रखिएगा. सो टेक केयर योरसेल्फ, टेक केयर योर बॉडी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बिकॉज रेनी सीजन इज वेरी सेंसिटिव सीजन फॉर ऑल ऑफ अस. हम सबके लिए बड़ा ही संवेदनशील समय है. सो फॉलो ऑल द रिज्म ऑफ द रेनी सीजन एंड मेक योरसेल्फ फिट एंड हेल्थी. ओके, सो फाइन, थैंक यू सो मच. नाउ विल क्लोज द सेशन टुडे. आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं. अब हम मिलेंगे अगली क्लास में. क्लोजिंग नाउ.